Hi friends, this is PH1501, Unit 1, Vector Analysis by Dr. M.R. Gadhvi. Topic number 3, Integral Calculus. In electrodynamic, we encountered several different kind of integrals, among which most important are line integral, it's commonly also known as the path integrals, surface integrals, or sometimes it is uttered as a flux integral, and the volume integrals. We will be focusing on each one by one. Let's start with the line integral. A line integral is an expression of the form written as integration from a to b vector v dot vector dl, where the v is a vector function and dl is an infinitesimal displacement vector, and this will be written as shown over here, integration sign limit from a to b v dot dl. dl is an infinitesimal displacement in a direction of the vector v, and it's written as dl vector dxx cap plus dyy cap plus dzz cap. Vector v will be again in the vector form. Now when they are talking about a line integral, so the line path is spreaded in between point A to point B. Whenever we are talking about a path, so there is a two possibility. The path is independent and path is enclosed. That means B and A points are on the same position. That means B and A are on the same point. That means they are the closed loop. And if it is a closed loop, then the line integral expression become integration with the encircled with the integration sign, and that would be representing the path is enclosed. So we take a dot product of a v evaluated at the point with the displacement, rather infinitesimal displacement dl, to the next point on the same path, and this way we will be understanding the line integral. The easiest way to understand the line integral with the idea of the work done by the force F. So W is equal to integration of F dot dl, well F is the force and dl is a small displacement, infinitesimal displacement is taken place in the direction of the F, and therefore we will be having two options. One is this work done which do depend on the path, and another one which is not depend on the path. Ordinary value of a line integral depends critically on the path taken from A to B. But there is an important special class of the vector functions for which the line integral independent of the path and is determined earlier entirely by the endpoints. That means suppose आप path यहाँ A से B तक काम कर रहे हो, तो it will only depend on the beginning point, and the end point it's not depend on the path how you are completing the work done from point A to point B. So if it is independent of the path, it is known as a conservative force, and if it is a dependent on the path, that means if I have calculated the work done from A to B via, let us say, path 1, and the amount of the work done what I have calculated, if it is different from the work done I am using in the path A to B using the path 2, then they say it to be a independent of path, and in this case you can tag as a conservative forces.
if it is independent of the path. If it's depend on the path, माने वो path पे dependent है, तो माने path 1 का आंसर और path 2 का आंसर, that will give you the result. Let us check it up over here and picture get more clear. If the force present is conservative in nature, then work done in both path will be the same. माने path 1 से होता हुआ work done और path 1 से हुआ हुआ work done same होगा in case of a conservative. Conservative that means independent of the path. अगर path पे dependent है, then naturally their work done will be different. Their work done will be different because one path is a longer one, so it will require more work done, and another is a less one. So this will be a non-conservative. That would be a non-conservative. So अगर non-conservative का अगर मैं एड्रेस करूँ एक एग्जांपल, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ. अगर ये पाथ 2 पे अगर मैं कुछ चीज़ ले जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन विल बी मोर बिकॉज इट्स अ लॉन्गर वन एंड पाथ 1 हैविंग अ लेस फ्रिक्शन. सो वो हो गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. और कंजर्वेटिव फोर्स में लेट अस से इट इज़ लाइक अ ग्रेविटेशनल फ्रेम की अगर मैं बात करूं, सो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितना हाइट का डिफरेंस है, चाहे आप घुमा फिरा के ले जाओ या अल्टीमेटली वर्क डन इज डिपेंड ऑन द बिगिनिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. सो इट इज़ independent of the path and therefore it is known as a conservative forces. Okay, so with this clarity, let's move ahead, and I having a one example that is a path 1. That is path 1 is again split up into two parts. One is a horizontal path and another is a vertical path. So the summation of this Roman letter I and double I, that will give you a 1 and 1 and 2, that will give us a path 1 option, and path 2 option directly from point A to point B. So we will be now executing this figure in the example. लाइन इंटीग्रल का अगर हमें समझना है तो ये जो एक छोटा सा वेक्टर दिख रहा है, बहुत सारे वेक्टर्स, एंड दैट वे आई एम अचीविंग द पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो पॉइंट ए टू पॉइंट बी को मैंने बहुत सारे वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, और देयर फॉर इफ़ इट इज़ अ वेक्टर, इफ़ आई विल टेक अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल, चाहे कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, लेकिन अगर छोटा सा एक लाइन का मैं टुकड़ा पसंद करूँ, देन इट विल बी ऑलवेज कंसिडर टू बी अ vector, it would be a straight line, and in that case I can sum up all these small vectors right from the A to the B, and therefore the integration concept is come to the picture over here, that you have to sum up all this small dl right from the position A to position B. So integration of the vector functions which you have split up with the infinitesimal concept, and then you have to execute the dot product of the infinitesimal displacement and the overall your behavior of the vector linear function which is executing the path. Okay, so with this we will be learning in the example number 6, where we want to calculate the line integral of a function v, that is y square x cap plus 2x of y plus 1 y cap. So right now instead of a 3 dimension we are just taking a 2 dimension. Let me have a parallel figure. So for ease of us, I am just making the 2 dimensions, and therefore it would be easy for me to give you the guidance. It's not coming. I think we need to have a vertical.
calculative. Okay, so let me try it out with this one. No. Okay, so this is example number 6. We want to calculate using this figure. Okay, so the path right from point A to point B, this vector either via path 2 or via path 1 is represented by the vector V. The beginning point of the A is given by a 1 1 and 0, that is Z is not available, so third dimension is not available. B point is 2 2, so this is 2 2 and this is 1 1. From the graph also you can point it out, this is 2 and this is also 2 and this is 1 and this is 1. Okay, and then along the path 1 and 2 using the figure 21, so this is this. What is also the, if it's a closed loop, माने A से start हुआ, B पे पहुंचा और पाथ 1 से वापस आया, या तो पाथ 1 से आप B पे गए और B से वापस A पे आ गए. So if it's a closed loop, so that means integration of a V dot dl with a circle on the integration sign, so it's a closed loop identification for the loop goes from A to B along the path 1 and returns via path B, path B, then what will be the work done? So we will be calculating that way. So in exam there is a two kind of questions will be asked. One is weighted by 2 mark, another is weighted by 1 mark. Now if I need to ask these questions, then I will prefer to ask you in a 2 mark, but then I will be asking the multiple segment, and each segment I will be weighted by 1 mark. So maybe a 4 mark questions where you have answered this as a 1, this is as a 2, this is as a 3, this is as a 4. Let us try to learn it. So del x is given by dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. सो फॉर पाथ 1, अगर पाथ 1 के लिए देखा जाए, सो dl में कैसे विजुलाइज करूँगा? सो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास y कंपोनेंट कांस्टेंट है लेकिन z कंपोनेंट तो है ही नहीं, सो dz विल बी 0, वेरी फर्स्ट पॉइंट. देन दिस इज अ infinitesimal, so dl है that is a small variation in the infinitesimal displacement. Displacement कैसे बनता है? Small variation in x, small variation in y, small variation in the z, correct? So this way it will be done. Small variation in a dx, small variation in a dy, small variation in a dz. But if you look at here, the y is not changing. y a point पे भी 1 है और ये turning point पे भी 1 है. So y is equal to 1 and therefore dy is also become a 0. z dimension तो है ही नहीं, so ये दोनों टर्मिनल निकल गए. और फर्स्ट पाथ के लिए रोमन लेटर 1, फर्स्ट पाथ के रोमन लेटर 1 सेगमेंट के लिए विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, दिस पाथ is the dl is written as a dx x cap. Y is also 0, y cap is also 0, z cap is also 0. Then let us go with the v dot dl. So v is this one and dot dl, so naturally you are knowing in a dot product only the identical unit vector component do exist. So if I do have this is a x1, if I do have this is a x1 is a x cap, and over here only the x cap will be existing and rest part will be not existing, that is a x cap, y cap cannot exist because they are orthogonal in terms to 0. So v dot dl will give me y square dx. V dot dl will give me y square, x cap become 1, so y square dx. So that is here. Okay,
Now y is equal to, we had already mentioned it is a 1, so अगर मैं y की जगह 1 रख दूँ, so ultimately हो गया that is equivalent to only dx. So I am taking integration of v dot dl. The range of a limits is running from 1 to 2. x का वेरिएशन देखो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ dx है, तो x range is moving from 1 to 2. So integration is moves from 1 to 2. आंसर इज 1, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट्स हो जाएगी, अपर लिमिट इज़ 2, लोअर लिमिट इज़ 1. सो इंटीग्रेशन की लिमिट 2 minus 1, सो अल्टीमेटली आंसर इज़ 1. सो द पाथ 1 में द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पाथ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाथ 1, उसका आंसर मिला 1. Now let us check it up the vertical path. तो path 1 का vertical segment, that is a component I. So that will be giving us variation in a y. Y variation is giving us 1 to 2, 1 to 2. But during the vertical variation, the x component is remain constant, so that is x is equal to constant, so x is equal to only 2, it remain 2. Now let us check it up the dl. So dl become, where is dl? Here is the dl. So x में वेरिएशन है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0, सो dx 0 हो गया. थर्ड कंपोनेंट dz भी 0 है, क्योंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर ही नहीं है. सो ओनली रेस्ट पार्ट इज द dy, सो dy y cap इज द दिस वन. x इज इक्वल टू 2. लेट अस चेक इट अप v डॉट dl. v डॉट dl करने से this dl is multiplying with this one. Now in the present case only y cap will do exist, because y cap and x cap become 0. So first factor will be diminished. Now y cap dot product with the y cap, so only this will stay, and that is 2x y plus 1. So it become a dl is equal to 2x y plus 1, rather v dot dl is equal to 2x of y plus 1 dy. Correct. Now x is equal to 2, so 2 2s are 4, so it becomes 4 of y plus 1 dy. अब मैं इसकी इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, सो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl लिमिट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2. 1 to 2 क्या है? अभी y का वेरिएशन dy, चेंज इन द y, चेंज इन द y इज 1 to 2. ये वर्टिकल पाथ का वेरिएशन माने फर्स्ट पाथ में सेकंड सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सो आई दैट इज 2i की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 1 to 2. सो y प्लस 1 dy, अगर इसका इंटीग्रेशन दो पार्ट में कर दो, सो आई हैव शोन हियर, सो इट बिकम अ y dy इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, और दूसरी इंटीग्रेशन हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन dy. सो अगर y की इंटीग्रेशन लो, सो ये दिस इज, एंड ईच केस यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाई 4. सो y की इंटीग्रेशन हो गई y स्क्वेयर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2, और यहाँ पे थोड़ा कट गया है, लेकिन it become y, and again it's 1 to 2. Now when you substitute 2, 2 2s are 4, so 4 divided by 2, so it become a okay, so this 2 is divided by the this 4, so it become a 2, so y square, so that is 4, 4 minus 1, so I am writing 4 minus 1. This 2 I am consuming with this 4, okay, so it become a 2. 4 minus 1 कितना हो गया? 3, 3 2s are 6. और नाउ सेकेंड फैक्टर के लिए, सो दिस इज अ 1 to 2 dy, dy का माने y हो गया 1 to 2, और 2 minus 1, so it become 1, so it become a 4, so this become a 4. 6 plus 4, so that become a 10, so answer is 10. So now for entire path 1, the summation of the Roman letter I and Roman letter 2i. So this part and second part will do the summation 1 plus 10, so it become 11. This is the line integral of the path 1. Let us check it up the path 2.
यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना कि पाथ 2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पाथ ए का कोऑर्डिनेट्स है 1 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2 and 2. Okay, so that means in both the case you having a x and y are same. यहाँ पे भी x y सेम है और b पॉइंट पे भी x y सेम है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट आउट निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। नाउ अगर x और y सेम है तो वहाँ के अगर चेंज इन द x दैट शुड बी इक्विवेलेंट ऑफ चेंज इन द y। इफ़ आई विल डू अ सर्टन x और y सेम है तो dx dy भी सेम हो गया। नेचुरली dz 3 डायमेंशनल तो है ही नहीं, तो dz मैंने 0 एज्यूम कर लिया है, करेक्ट। एंड नाउ dz is 0. Okay, so now what is a dl? dl is a dx x cap plus dy y cap, ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन x and y are same, so dx x cap और dy की जगह मैं dx ही लिख रहा हूँ, so dx x cap प्लस dx y cap। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप y में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। सो नाउ v डॉट डी एल, सो दिस डी एल विल शुड मल्टीप्लाई बाई विथ योर v प्रोडक्ट। सो एक्स कैप अगर मैं यहाँ पे लूँ तो वो ये हो गया वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। सो वाई स्क्वेयर इज नथिंग बट द एक्स स्क्वेयर, सो आई एम राइटिंग एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्योंकि एडजॉइनिंग कंपोनेंट इज डी एक्स। सो एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस दूसरा लेते हैं डी एक्स वाई कैप should multiply over here with a y cap, so this become 2x of y plus 1, 2x plus 2x of y, 2x into y plus 1, और y cap और ये y cap will be turn out to be 0, so 2x y plus 1 dx is that would be your dx, but x is equal to y, so this y I am rewriting as a x, so 2x of x plus 1 dx, so that become your v dot dl. So x square dx plus 2x square plus 2x dx, so यहाँ पे भी 2x square है, यहाँ पे भी x square है, so that become total 3x square and 2x will multiply by with 1, so it become a 2x and dx is common. So we can take the integration of a to b and v dot dl written as 1 to 2 3x square plus 2x dx, so ultimately it become x cube plus x square limit 1 to 2 and it gives us the answer 10. अगर यहाँ पे 10 आंसर मिल रहा है तो so now I think we don't require the vertical, so let's mix this one and make it the enlarged copy. So once you have calculated path 1 and path 2, and then you can check it up the summation of path 1 and path 2 and your total summation become, just a minute, it moves fast, so yeah, so it become a 10 and if I will check it up the path B, so it is a 10 और path 1 का आंसर आ रहा है 11. If both answers are different that means it is a path dependent. अगर path dependent है माने एक path पे एक आंसर आ रहा है, दूसरे path पे दूसरा आंसर आ रहा है। So फिर से अगर याद दिला दूँ तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन सा कंजर्वेटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है तो कंजर्वेटिव, अगर डिपेंडेंट पाथ है तो नॉन कंजर्वेटिव। सो लेट अस चेक इट अप दिस, इफ द फोर्स प्रेजेंट इज कंजर्वेटिव इन नेचर देन वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन in both path will be same and that will be the, as for example it's a gravitational frame. अगर frictional force अगर आप सोच लो, if the force is non conservative in nature then work done will be
डिफरेंट, माने A to B पे जाओ या तो पाथ 1 पे जाओ, वर्क डन विल बी डिफरेंट. हमारे केस में वर्क डन डिफरेंट आ रहा है. सो इट इज़ समथिंग लाइक अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज़ लाइक अ नॉन कंजर्वेटिव force. Okay, so let us close this one and again go back to the this one. Okay, now we will learning the surface integral. सरफेस इंटीग्रल पे जैसे कि आगे वाले केस में लाइन इंटीग्रल था, तो एक लाइन पे हम वेक्टोरियल डिस्प्लेसमेंट लेके वही सब इनफाइनाइटेसिमल वेक्टोरियल डिस्प्लेसमेंट को हम सम अप करते थे. So over here we will be taking the small surface over a surface, and then that surface will be integrated throughout the surface, and that way we will cover the entire surface. So अगर सोचा जाए तो ये एक बड़ी सी सरफेस है, उस पे से मैंने एक छोटा सा एक सर्कल बनाया. सो दैट सरफेस आई एम टेकिंग, और वो एक छोटा सा सर्कल सोचा हुआ हाइपोथेटिकल स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल एरिया on the chosen surface, and the vector is emerging out perpendicular outward from that surface is said to be a dA. फिर से बोल रहा हूँ, the surface on what you want to do the integral surface का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, वहाँ पे एक आप छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एरिया चूज करोगे, और वो एरिया से परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर को हम dA बोलेंगे. Am I clear? Okay, so now this dA will be written as dz x cap. हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपकी सरफेस है, ये y डायरेक्शन है, तो माने y प्लेन y डायरेक्शन में अगर सरफेस पड़ी है, तो उसकी सरफेस है वो, अगर y डायरेक्शन में आपका dA वेक्टर पड़ा है, सो द सरफेस विल बी इन द एक्स जेड डायमेंशन. अगर जेड के डिमेंशन में डी ए वेक्टर पड़ा है, तो दैट सरफेस विल बी लाइंग और कटिंग द जेड एक्सिस, सो दैट वुड बी द डी एक्स डी वाई. और सिमिलरली अगर आपका डी ए वेक्टर अलोंग द एक्स यूनिट वेक्टर आ रहा है, सो योर सरफेस विल बी पैरेलल टू डी वाई डी जेड. ओके, so here we will be writing the surface integral expression in the shape of integration, और यहाँ पे हम s लिखना शुरू करेंगे. लाइन इंटीग्रल में कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में x आएगा. that gives us a triggering that it's a surface integral v dot dA. अगर dA लिखा है तो भी आपको पता चल जाएगा dA is a vector perpendicular to the small surface element over a chosen surface or the area over which you want to execute the integration. Okay, फिर से पढ़ते हैं. So v is again a some vector function and integral is over a specified surface S. कोई एक S नाम की सरफेस पे वेक्टर फंक्शन v का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो. Here dA is a infinitesimal patch. पैच माने वैसे तो एरिया ही हुआ, तो ये छोटा सा पैच जो सर्कल दिख रहा है वो. सो इनफाइनाइटेसिमल पैच ऑफ अ एरिया विथ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो dA की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. देयर आर ऑफ कोर्स टू डायरेक्शन इज पॉसिबल, परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर inward. Okay, and if the surface is closed one like a balloon, अगर बलून में हवा भरो तो नीचे जहाँ पे आप डोरी लगाते हो तो वो सरफेस वहाँ पे क्लोज हो रही है. सो इट्स अ गुड एग्जाम्पल बलून. सो આપણે જેને ગુજરાતીમાં ફુગ્ગો કહીએ, so that would be a closed surface. In the closed surface इंटीग्रल विल बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सर्कल. उसमें लाइन इंटीग्रल था, लाइन इंटीग्रल में हम यहाँ पे एस नहीं लिखते थे, यहाँ पे सरफेस का एस आएगा. यहाँ पे भी बुक में भी मिसप्रिंट है, लेकिन वो एस लिखना है. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड विथ एन वेरी गुड एग्जाम्पल.
you will be very much clear with this. Try to focus on this particular क्यूबिक सेटअप इज गिवन. मान लो कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल का डिमेंशन है 2 लेटिस. तो 2 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस एंड 2 ऑन जेड एक्सिस. क्यूबिक यूनिट सेल है, डबल लेटिस कांस्टेंट की उसकी विड्थ, लेंथ एंड ब्रेथ है. सो द डायमेंशन विल बी इन दिस वे. सभी सरफेस, या तो एक आप डाइस सोच लो और सभी डाइस के एक सेंटर ऑफ प्लेन में मैंने एक छोटा छोटा पेच बनाया है. कितने वेक्टर्स बनाने? 1 2 3 4 और पीछे वाला 5. ओके, बॉटम सरफेस को छोड़ दिया. नाउ द DA when it comes out, it is considered to be the positive, and when the arrow is going in, it is considered to be the negative. So let us remember that V dot dA represents the total mass per unit time passing through the surface. माने ये कभी कभी फ्लक्स भी आप मेजर कर सकते हो कि एरिया में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है. ओके, अल्टीमेटली इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द फ्लक्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. तो अगर फ्लक्स मुझे मेजर करना है, या तो आप ऐसा सोचो कि देर इज़ अ लाइन ऑफ वाटर एंड वाटर इज कमिंग आउट थ्रू नोजल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो नोजल क्रॉस सेक्शनल में से आने वाला पानी का फ्लक्स कितना होगा? अगर वो, या तो अमाउंट ऑफ वाटर इज हाउ मच कमिंग आउट थ्रू दैट वन, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू द सरफेस इंटीग्रल. ओके, सो ये जो यूनिट सेल 2 लेटिस लेंथ का लिया था उसमें से 5 एरोज हम सोच रहे हैं. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फिगर. सो फिगर इज ऑल्सो गिवन हियर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7, एक वेक्टोरियल फंक्शन दिया गया है, दैट इज अ 2x z x कैप प्लस x प्लस y कैप, y of z square minus 3, that would be z कैप, एंड एक्सक्लूडिंग द बॉटम. मेंशन कर दिया कि बॉटम को नहीं लेना है. ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, दैट इज अ साइड नंबर 2 इन फिगर 23. लेट अपवर्ड एंड आउटवर्ड बी पॉजिटिव डायरेक्शन. अपवर्ड गिन लो या तो आउटवर्ड गिन लो. दिस ऑल आर द arrows which we can calculate the positive because it's going outward. यहाँ कहीं पे positive लिखा है. So the tradition decides outward is a positive, but for the open surface arbitrary. माने अगर ये ऐसी सरफेस है तो ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाला नेगेटिव अपने आप हो जाए. अगर नेगेटिव नीचे वाले को पॉजिटिव लो तो ऊपर वाला पॉजिटिव. तो ओपन सरफेस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसी क्लोज सरफेस हो, डाइस है, बलून है, तो आउटवर्ड एरो विल बी बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव, इनवर्ड एरो विल बी बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव. ओके, so with this let us calculate V of 2x plus x cap plus x plus 2y cap plus y of z square minus 3 z cap. If I want to calculate the surfaces, so taking the sides one at a time. So first surface माने ये सामने वाली surface, correct? ये सामने वाली surface which is cutting the x axis. अगर x axis को plane cut कर रहा है, so naturally that plane is lying in the yz, correct? So how shall I write? X is equal to 2, यहाँ पे तो 2 पे कट कर रहे हैं तो x become 2. dA is equal to x unit vector, so x cap, and naturally that patch is on the surface of the plane, that is dy dz. So dy dz x cap, that would be your A. So let's go with the V dot dA. V और A का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर V और सरफेस वेक्टर dA, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर लो तो दिस dA only x cap and x cap will do exist, and since it is exist,
we should not think about the rest part of that is the x cap y cap turns out to be 0, x cap z caps that is also turns out to be 0. So 2xz dy dz, that would be your 2xz dy dz, that is your v डॉट dA का मूल्य होगा. अगर ये 2xz dy dz है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सो x को और z को z के साथ और x इज़ कांस्टेंट ओवर हियर, x इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो z को dz के साथ और dy को इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट कर सकते हो. सो बाय रिप्लेसिंग द x वैल्यू बाय 2, सो 2 2s are 4, so this become 4 z dy dz and so on. So the expression will be written as integration, surface का s लिखना भूल गए हैं, v dot dA is equal to 4 integration from 0 to 2 dy. So dy I am taking as it is, and z dz. So integration of 0 to 2 z dz. This integration is talking about the surface. Surface हमने कौन सी ली है, जो x को कट के जा रही है, x को कट के जा रही है, उसमें x is equal to 2. Correct. So x surface is varies, the surface which is cutting the x-axis varies 0 to 2, 0 to 2. Okay, and therefore it become a, if you look at here 4, so it's a 2 minus 0, so it become a 4 to the 8 into, यहाँ पे अगर देखो तो z स्क्वेयर बाई 2, और z स्क्वेयर बाई 2 में z के स्क्वेयर की जगह अगर आप 2 रखो तो 2 का square, so it's a 4 by 2, so it become a 2, and therefore it's written 2 over here. So 4 into 2 into 2, so 2 2s are 4, 4 4s are 16. So surface 1 का इंटीग्रेशन मिला हमें 16. सिमिलरली 2 का हमें मिल रहा है 0, 3 का मिल रहा है हमें 12, 4th का मिल रहा है हमें -12, और 5th का हमें मिल रहा है 4. Let me again put it the surface in front of us and try to calculate one more, and then I will leave it to you to understand the phenomenon. और यहाँ पे मैं फिगर लाता हूँ, ठीक है. So figure is here. So let us say surface number 2. Surface number 2 माने अगर ये फ्रंट वाली 1 है तो 2 इज़ बैकयार्ड. अगर वो प्लेन अगर देखा जाए तो ओरिजिन पे लगा हुआ है, करेक्ट. सो इट इज़ लाइंग ऑन द ओरिजिन. सो x इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट टेक लाइन. फिर डी एरिया, सो वाई जेड. सो y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2. So y and z both are is equal to 2. Point number 2. Then dA. So dA कैसे लिखा जाएगा? The dA will be written as like basically yeah. So basically dA will be written for the x is equal to 0. So यहाँ पे dA क्या आएगा? The plane is lying in the yz plane, so dy dz x cap. But still they are coming a negative. If you look at the direction of the 2, so it is a negative x direction. So negative unit vector x के opposite में है, so it become a negative one. So that is your dA. So now you can do a dot product of a v dot dA, and v dot dA will give me -2 xz dy dz. और यहाँ पे तो y कंपोनेंट भी नहीं है और z कंपोनेंट भी नहीं है. सो
it is a very interesting thing that x cap is multiplying with the x cap. So 2xyz, x dot x become 1, so 2 minus 2xz dy dz, and minus is coming because of the dA itself a minus, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो जाने वाला आपका यूनिट वेक्टर. So with this you become like this v dot dA. Now v dot dA is minus 2xz dy dz, and integration of them, so dy will be independent of this. Now x is equal to 0, so x अगर यहाँ पे 0 रखो तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी because entire factor becomes 0. Similarly you can think for the 3, think for the 4 and think for the 5. So आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे and you can do the total flux through the cubic unit of a dimension 2 lattice. That will gives us integration of a surface v dot dA and do the summation, it will be total is 20. एग्ज़ाम में अगर मुझे ये आपको 3 या 4 मार्क में पूछने हैं, so basically I will ask each surface as a 1 mark, so that is a justifiable. But in all, या तो ये क्यूब में मैं 2 सरफेस का फ्लक्स लीकेज या तो फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको मैं पूछ लूँ, so that become the way to design the question in exam. Okay, so this way we can check it up the surface integral. Now the last is that is volume integral. Volume integral, to understand the volume integral it's easy, but the example is very tricky, so be careful while I am explaining you. Volume integral is again over here written as integration sign v for a volume, t is a in this case t is a scalar function, remember that I am mentioning here t is a scalar function, and tau, that is d tau, is an infinitesimal volume. So t dot d tau, that will gives us the infinitesimal volume dot product with the scalar function t. So here d tau will be written as dx dy dz, so it's an infinitesimal volume. For example, if t is a scalar function as I said here, so let me assume that t is a density density of a substance. Now in this case the t dot d tau can be calculated, so volume dot d tau integration is equal to integration of vx x cap plus vy y cap plus vz z cap into d tau. This is a normal dot product, and d tau is basically a dx dy dz. So here it is a x cap integration with the vx d tau, y cap integration with the vy d tau, plus z cap integration of vz d tau. This is the way to write it out, the volume integration. Okay, and let me make it again enlarged so it will become easy to understand it. So this is the way to understand it, and let us check it up the example calculation number 8. Calculate
the volume integral of a t is equal to x y z square over a prism. Again warning you, it's a very nice example, try to digest this example. And this example says that calculate the volume integral, that is t is equal to x y z square over a prism. This is a prism, so the prism cutting the x-axis 1, cutting the y-axis 1, and the height of the prism is 3, and therefore you can write it over here. Now here it is a right angle prism, so on an average we have seen the integral the prism angle is 60, but over here we having the perpendicular prism. Now in this case it is reaching the edge, that is 1, and on y-axis also 1. Now what is exactly the volume integral can be understood. वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे समझूं, तो ये जो ट्राइंगल नीचे छोटा सा बन रहा है, ऐसी ही मल्टीपल सो मेनी स्लाइस ऑफ अ ट्राइंगल यू कैन थिंक ऑफ टिल द पॉइंट 3. तो अगर मुझे एरिया ऑफ अ लोअर ट्राइंगल विच इज़ ऑन द एक्स वाई प्लेन में जो एरिया बन रहा है, दैट इज़ अ origin one cutting axis and the another one unit cutting axis, that triangle will gives me the area multiply by throughout the length of the z axis will give me the volume, क्योंकि ये area into height, so that becomes the volume of a prism. So this is basically you will get understand via this. So calculate this part. Over here what we have observed, that integration of t dot d tau 0 to 3, that is varies for the z axis, 0 to 1 that is varies for y variable, and 0 to 1 that is variable for the x. But when you are looking this variations, अगर मैं ये चेंज कर रहा हूँ ऊपर की तरफ अलग अलग स्लाइस में सोच रहा हूँ कि there is a stack of the so many triangular size up to the point 3 on z axis up to the point 3, then what is I can think of when I will be changing a x, then I should put it a y in terms of x, या तो अगर मैं y को फोकस कर रहा हूँ then I should think x in terms of y. To understood this particular how this become, instead of x की वैसे तो रेंज 0 to 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा, 1 minus y लिखा. How it appears, I show it here. Auto scroll हो गया है, sorry. I was worrying that why it is changing continuously. Okay. So let me again make enlarge. So this is this triangle. So let us say this is a y and this is a x. So this is x, this is y, both is cutting the x-axis and the y-axis. So y is equal to mx plus c. I can write it out for a straight line, but since the slope is negative, so I am writing minus mx. The intercept on a y-axis, so that is a c, so it is a 1. So if you look at here, I wrote y is very small, but you can think of, I can try to make it a little bit larger. So y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus 1, so that is intercept. फिर मैं ये राइट हैंड साइड 1 से लेफ्ट हैंड साइड 1 ले गया, सो y minus 1 is equal to mx.
Since the slope is -1, so that minus I consume here and it become x is equal to 1 minus y. So 0 to x लिखने की जगह rather तो 1 लिखना चाहिए, but I want to put it the y in terms of, so x variable in terms of y, so x is equal to 1 minus y x dx. x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2, उसकी अपर लिमिट है 1 माइनस वाई, सो 1 माइनस वाई होल रेस टू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2. सो ये डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया. z स्क्वेयर 0 to 3 एज इट इज़, 0 to 1 with y is as it is, so y is here, you can just check it up, 0 to 1 is as it is. और ये 1 माइनस वाई, ये इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 हुआ, तो दिस इज 1 minus y whole raised to square. This y is here, so let me highlight here. Okay, I don't want. Let me highlight here. This y, this y. And somehow it's not happening. Anyway, so this y and that y is also a same one. This y and this y is the same. This y is the same. Okay, so this y and this y is the same. So now it become, if I will separate this as a integration, so it become a y minus y cube. Rather it is a algebraic one, so it's a 1 minus 2y plus y square, because it's a expansion of a 1 minus y all raised to square multiplied by y, and if you get, your answer is 3 by 8. So this is a very nice example. The last slide gives me the 3 examples. This is for your practice. So ultimately, in the previous lecture number 8, I am giving you the example number 26, 27 and 28 as an assignment, and now 29 and 30 and 31 as an assignment. So answers I had already calculated by myself for line integral. एक surface integral का example है और एक volume integral का है. एक surface integral का, sorry, line integral का problem number 29, यहाँ पे line integral लिख के दिया है, यहाँ पे surface integral लिख के दिया है, और यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल नंबर 7 का वेक्टर फंक्शन यूज़ करना है. सो मैंने फॉर ईज ऑफ यू आई हैड ऑलरेडी मेंशन इट over here. Same way over there for the each surfaces as well as the closed surfaces, so they are, you need to check it up both the way. Outward we will be considered as a positive, and positive direction is outward, and hence down from the bottom of the face. So this is the way you have to calculate the surface integral. Please do it, because I will be putting a solution, no doubt it, for us, but I emphasize that you should work by yourself to calculate this whole examples by yourself. I will giving you a 1 day interval, and I will be putting by tomorrow evening I can able to put the solutions of the problem number 26, 27, 28 as well as 29, 30 and 31, right? Thank you so much for paying attention. Stay home, stay safe. Goodbye.